In an unprecedented move, the National Assembly passed the Contempt of Majlis-e Shura, Parliament, Bill 2023, on May 15. The bill will, however, need to be passed by the Senate and receive presidential assent before becoming the law. Even after going through that process, the law may be challenged in the superior courts that may withhold the implementation of the law, as the Supreme Court did in the case of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, passed by the joint session of Parliament last month. The Contempt of Parliament Bill 2023, as passed by the National Assembly, prescribes a punishment of up to 6 months in prison and a 1 million rupees fine, or both, for anyone found guilty of holding Parliament or its members in contempt. Contempt has been defined as breaching the privileges of a lawmaker, violating the laws guaranteeing the immunities or privileges of lawmakers, failing to obey the orders of Parliament or its committees, refusing to give evidence or recording a false statement before a committee, attempting or influencing a witness to prevent him from providing evidence, producing documents or appearing before the committee, and failing to provide any documents or submitting tampered documents before a House or a committee. The rationale behind the bill seems to have been based on Article 66 of the Constitution, which deals with the privileges of members of Parliament. Sub-Article 66(3) states that the provision may be made by law for the punishment, by a House, of persons who refuse to give evidence or produce documents before a committee of the House when duly required by the chairman of the committee so to do, provided that any such law, a, may empower a court to punish a person who refuses to give evidence or produce documents, and b, shall have effect subject to such order for safeguarding confidential matters from disclosure as may be made by the President. While the bill passed by the National Assembly provides for safeguarding confidential matters from disclosure, it does not empower a court to punish a contemner. Instead, it proposes the constitution of a 5-member contempt committee consisting of a member of the National Assembly nominated by the Speaker, 2 members from the National Assembly, 1 nominated by the Leader of the House and the other by the Leader of Opposition, and 2 members from the Senate, 1 nominated by the Leader of the House and the other by the Leader of Opposition. The bill also provides for the election of the chairperson of the committee by the committee and the Secretary, National Assembly, to act as Secretary of the Contempt Committee. The contempt law move is seen as the result of the tension between the NA and the SC. An appeal against a decision of the Contempt Committee under this law may be filed before an appellate forum, consisting of the Speaker of the National Assembly and the Senate Chairman, while the Senate Secretary will act as Secretary to the appellate forum. A schedule of offenses has been made a part of the proposed law. The Speaker, who will consult the Senate Chairman, has been authorized to amend the schedule. Until now, and in the absence of any law, the questions regarding the contempt of legislators were being dealt with under the rules of procedure and conduct of business of each legislature. A separate chapter in the rulebook of each legislature deals with the privileges of the members. The rules regarding privileges of all the 6 legislatures are almost similar and provide the details of privileges and the procedure to raise questions of privilege in the respective houses. But, surprisingly, these rules don't have even basic details about the punishment for breaching the privilege of legislators, committees, and houses. This lack of details about the punishment provides another rationale for framing a contempt law for Parliament. Once this law is in place, it is quite likely that the 4 provincial assemblies may also frame similar laws to address the issue of contempt of the respective assemblies. Interestingly, the rules pertaining to the Indian Parliament, too, do not provide details of punishment for the breach of parliamentary privilege, though the rules mention the possibility of framing a law to provide details about possible punishment. The Indian Parliament, apparently, has not attempted to frame a contempt law for the legislature so far. Apparently, the need for a law on the contempt of Parliament in Pakistan was felt in the backdrop of the ongoing confrontation between Parliament and the Supreme Court. While contempt of court laws exist in Pakistan, and at least one elected Prime Minister, Yusuf Raza Gilani, who enjoyed the confidence of the majority of National Assembly members, was not only sacked but also disqualified from contesting elections for 5 years by the Supreme Court in 2012 on charges of contempt of court,
there is no such weapon in the parliamentary arsenal. Parliament, the National Assembly to be precise, has lately defied orders of the Supreme Court to approve a supplementary grant of 21 billion rupees for holding elections to the Punjab and KP assemblies after they were prematurely dissolved by the PTI-supported provincial chief ministers on the instructions of party chairman Imran Khan. Prime Minister Shehbaz Sharif, the federal cabinet and National Assembly members apprehended that they might also be made to face the same fate as Mr. Jilani by the Supreme Court. The Contempt of Parliament law is apparently an effort by Parliament to engineer a tit-for-tat move. It, however, remains to be seen how far the proposed law will help Parliament and the parliamentarians safeguard their privileges. The writer is president of the Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency. Published in Dawn, May 20, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. कौमी असेंबली ने 15 मई 2023 को तौहीन अदालत का बिल मंजूर किया था। ताहम इस बिल को कानून बनने से पहले सेनेट से मंजूर करवाना और सदर की मंजूरी हासिल करना होगी। इस अमल से गुजरने के बाद भी इस कानून को आला अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, जो इस कानून पर अमल दरामद को रोक सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मामले में किया था, जिसे गुज़िश्ता माह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया था। कौमी असेंबली की जानिब से मंजूर किए गए तौहीन अदालत बिल 2023 के तहत पार्लियामेंट इसके अरकान की तौहीन करने वाले को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना दोनों सजाएं दी जा सकती है। तौहीन की तारीफ कानून साज के इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी के तौर पर की गई है। कानून साजों की मुरात की जमानत देने वाले कवानीन की खिलाफ वर्जी, पार्लियामेंट उसकी कमेटियों के अहकामात की तामील करने में नाकामी, कमेटी के सामने सबूत देने या झूठा बयान रिकॉर्ड करने से इनकार करना, किसी गवाह को सबूत फराहम करने, दस्तावेजात पेश करने या कमेटी के सामने पेश होने से रोकने की कोशिश करना, इस पर असरअंदाज होना और कोई दस्तावेज फराहम करने में नाकाम रहना, ऐवान या कमेटी के सामने छेड़छाड़ शुदा दस्तावेजात पेश करना। ऐसा लगता है कि इस बिल के पीछे दलील आइन के आर्टिकल 66 पर मबनी है, जो पार्लियामेंट के अरकान के इस्तेहकाक से मुताल्लिक है। ज़ैली दफ़ा 66(3) में कहा गया है कि कानून के जरिए ऐसे अफराद को सज़ा देने का एहतमाम किया जा सकता है जो सबूत देने से इनकार करते हैं, ऐवान की कमेटी के सामने दस्तावेजात पेश करने से इनकार करते हैं, जबकि कमेटी के चेयरमैन की जानिब से मुनासिब ज़रूरत हो, बशर्ते कि ऐसा कोई कानून अदालत को इस शख्स को सज़ा देने का इख्तियार दे जो सबूत देने या दस्तावेजात पेश करने से इनकार करता है। और इस तरह के हुक्म के ताबे होगा जिसके तहत खुफिया मामलात को इफ्शा होने से बचाया जा सके, जो सदर की तरफ से किया जा सकता है। अगरचे कौमी असेंबली की जानिब से मंजूर करदा बिल में खुफिया मामलात को इफ्शा होने से बचाने का एहतमाम किया गया है, लेकिन यह अदालत को यह इख्तियार नहीं देता कि वो किसी मुजरिम को सज़ा दे। इसके बजाय 5 रुकनी तौहीन अदालत कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें स्पीकर की जानिब से नामजद एक रुकन कौमी असेंबली के 2 अरकान, एक कायद ऐवान और दूसरा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और सेनेट के 2 अरकान शामिल होंगे। एक कायद ऐवान और दूसरा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से नामजद किया जाएगा। बिल में कमेटी की जानिब से कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब और कौमी असेंबली के सेक्रेटरी को तौहीन अदालत कमेटी का सेक्रेटरी बनाने की तजवीज़ भी दी गई है। तौहीन अदालत के कानून के इक़दाम को कौमी असेंबली और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तनाव के नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है। इस कानून के तहत तौहीन अदालत कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील अपीलेट फोरम में दायर की जा सकती है, जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट शामिल होंगे, जबकि सेक्रेटरी सेनेट अपीलेट फोरम के सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेंगे। मुजव्वज़ा कानून का हिस्सा जराइम के शेड्यूल को बनाया गया है। स्पीकर जो चेयरमैन सेनेट से मशावरत करेंगे, उन्हें शेड्यूल में तरमीम का इख्तियार दिया गया है। अब तक और किसी कानून की अदम मौजूदगी में कानून साजों की तौहीन से मुताल्लिक सवालात से हर मुकन्नना के ज़ाब्ताकार और ज़ाब्ताकार के तहत निपटा जा रहा था। हर मुकन्नना की रूल बुक में एक अलहदा बाब अरकान के इस्तेहकाक से मुताल्लिक है।
तमाम 6 मुकन्नना के इस्तेहकाक से मुताल्लिक़ कवायद तकरीबन एक जैसे हैं और इस्तेहकाक की तफसीलात और मुताल्लिक़ा ऐवानों में इस्तेहकाक के सवालात उठाने के तरीक़ाकार फराहम करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन कवानीन में कानून साज़ों, कमेटियों और ऐवानों के इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी की सज़ा के बारे में बुनियादी तफसीलात भी नहीं है। सज़ा के बारे में तफसीलात का ये फुक़दान पार्लियामेंट के लिए तौहीन अदालत का कानून बनाने के लिए एक और जवाज़ फराहम करता है। एक बार जब यह कानून नाफिज हो जाएगा तो इस बात का कवी इम्कान है कि चारों सूबाई असेंबलियां भी मुतालिका असेंबलियों की तौहीन के मसले को हल करने के लिए इसी तरह के कवानीन तश्कील दे सकती है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय पार्लियामेंट से मुताल्लिक कवानीन में भी पार्लिमानी इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी पर सज़ा की तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। हालांकि कवानीन में मुमकिना सज़ा के बारे में तफसीलात फराहम करने के लिए कानून बनाने के इम्कान का जिक्र किया गया है। बज़ाहिर भारतीय पार्लियामेंट ने अब तक मुकन्नना के लिए तौहीन अदालत का कानून बनाने की कोशिश नहीं की है। बज़ाहिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जारी महाज आराई के पस मंज़र में पाकिस्तान में पार्लियामेंट की तौहीन से मुताल्लिक़ कानून की ज़रूरत महसूस की गई। अगरचे पाकिस्तान में तौहीन अदालत के कवानीन मौजूद हैं और कम अज़ कम एक मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जिन्हें कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल है, को सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में न सिर्फ बरतरफ कर दिया था बल्कि 5 साल के लिए इंतखाबात लड़ने से नाअहल भी कर दिया था। लेकिन पार्लिमानी हथियारों में ऐसा कोई हथियार नहीं है। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 21 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी थी, क्योंकि पार्टी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर PTI के हिमायत याफ्ता सूबाई वज़राए आला ने उन्हें कब्ल अज़ वक्त तहलील कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के अरकान को खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनका भी वही हश्र हो सकता है जो गिलानी का हुआ। पार्लियामेंट की तौहीन का कानून बज़ाहिर पार्लियामेंट की जानिब से एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश है। ताहम यह देखना बाकी है कि मुजव्वज़ा कानून पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट को अपने इस्तेहकाक के तहफ़्फ़ुज़ में किस हद तक मदद फराहम करेगा। मज़मून निगार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 20 मई 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.